खुशी बहन, स्वागत है मेरे लाइव में। राधे कृष्ण।
खुशी बहन, धरोहर बहन, स्वागत है मेरी लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। बर्तन धो रही हूँ।
दीपा बहन, स्वागत है मेरी लाइव में। राधे कृष्णा। हर हर महादेव मेरी बहन। और बताओ, सबका क्या हाल चाल है? चल रही थोड़ा नहाने में जा रही हूँ, आधार बना रही हूँ। आप लोग कमेंट करिए। मोबाइल लगा दो, छीन के लगा दो। लाइव चल रही मेरी, सारा दिन मोबाइल देख रहा है ना, इसको लगा दो वाली मोबाइल, अपनी वाली छीन को से। मेरी लाइव में लगाओ जल्दी। हाँ। हेलो। दो में पैसा, पर्स में 10 रुपया है, लेके जाओ। तो पापा की जेब में से, पापा की जेब में होगा, 10 रुपया ले लो, जल्दी से जाओ। क्या पक जाएगा तब लेके आओगे। दुकान में मिलेगा, बोलू के? बोलू कि हाँ मिलेगा। तुम आंटी फलहारी नमक दे दो, मम्मी बोले 10 रुपये लेके जाओ। नहावे चलते। हाँ कर दो, कर दो। आप म्यूट कर दो, जब टाइम होगा तो आप बाय बाय कर देना। वैसे भी मैं बोल नहीं रही हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर भी आपको म्यूट करना है तो कर दो। मुझे टाइम ही नहीं है, फिर मैं नहाई नहीं हूँ, मैं फलाहार नहीं की हूँ। पहले तो खाना बनाई, सब लोग खाए, खा के अब फलाहार बना रही हूँ।
मिश्रा बहन, स्वागत है मेरी लाइव में।
अर्चना बहन स्वागत है, राधे कृष्णा, हर हर महादेव। और बहन कैसी हैं आप लोग, बताइए क्या हाल चाल है। आत्मविश्वास होना चाहिए कि आज शिवरात्रि व्रत हो कि नहीं। सोचिए कि वो पेट में जा रहा है, उससे ब्लड बन रहा है, ब्लड का डिजीज है। शिवरात्रि व्रत हो आओ। ब्लड का जैसे मतलब फेस पे होता तो आज न रिंकी लाइव चलाई, न पांडे बहन लाइव चलाई, न पूजा बहन लाइव चलाई। आज कई लोग लाइव नहीं चलाए। स्वागत है, राधे कृष्णा और हर हर महादेव। आपको ही पूछ रही हूँ, अर्चना को पूछ रही हूँ, जितनी जन जुड़ी हो सबको पूछ रही हूँ। मेरा भी हाल चाल ठीक है। मेरी फलाहार कर रही थी। खाना बनाई, खाना सब लोग खाए, फिर किचन साफ की, तब फलाहार बनाई। कितना भी फल ले लो, जब तक आलू नहीं तल के मैं खाती, मेरे पेट में इसलिए आलू जरूर तलती हूँ। आलू सेंधाना डाल के जब फ्राई करती हूँ तभी अच्छा लगता है। हमारी बॉडी को क्या नुकसान करेगा, हमारे लिए ज़रूरी क्या चीज़ है, अपने आप रिप्लाई दे। लालच इच्छा आनंद है।
सर्वेश बहन, स्वागत है मेरी लाइव में। राधे कृष्णा। जी माता। दीदी 1 घंटा हो, हाँ 1 घंटा हो गया आपका। ठीक है। राधा चड्ढा अगर बीजेपी में आके सर्वेश बहन, क्या हुआ? वॉच टाइम पूरा आपका मेरा लाइव एक टाइम कर दिए, इसीलिए नहीं आ पाती। अरे वो इंसान मतलब दिन भरो ना ये यूथ का पूरा इंडिया का मतलब गरीबी का ऐसा समझता कुछ नहीं कि 9 बजे से ही चालू सवाल करो, भी आप ऐसे 2-3 बार उठाता दिन में है भी 2 बार चालू करती हो। कि मिडिल क्लास के लिए बहुत भ्रष्ट है। और 3 बजे से आप चालू कर दिए करो, बड़ा अपनी चड्ढा आईडी छोड़ के लगा दिए करो, जो घर की आईडी है, सब जिसको perfect है। सपोर्ट करोगी वो तो आएगा, चाहे आप जितनी भी बजे भी करोगे करेगा। खुद बताओ लेकिन सवाल अभी जिस ज्यादा हिसाब से वॉच टाइम उठाता है, बाकी है। पढ़ा लिखा कितना है अच्छा हाँ, ठीक है, सवाल ऑन हो जाओ। उठाना, सवाल तो केजरीवाल भी उठाए थे, उसी के बल पर जीते, लेकिन उसको पूरा किए। वो तो शीश बनाना अपना बनाना चालू किया। बोलता है कि जिस एयरपोर्ट पे फ्लाइट मतलब फ्लाइट के लिए इंसान वेट करता है वहाँ पे 100 रुपए का पानी और 50 रुपए के समोसे कौन अफोर्ड करेगा। एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान अगर किसी एक फ्लाइट की टिकट भी निकाल लेता है ठीक है, कर दो तो उसको अफोर्ड कर पाएगा कर वेटिंग दो एरिया में। खाने और करने में कर दो। अंतर कल है आपके ना। लाइव में 6 बजे शाम को और आऊंगी, साइड क्योंकि के देखो सुबह तो थोड़ा 6 बजे तक केजरीवाल यही मतलब चलता बोलता रहता है। अच्छा है पढ़ा लिखा है काफी। तो इसी से तो लोकप्रिय होंगे। हाँ भाई बोलता भी अच्छा है करता भी अच्छा है यहाँ तक करता नहीं अच्छा है। मतलब कर दो सवाल बहुत कर दो। अच्छे अच्छे एकदम पॉइंट की बातें रिंकी भी करते हैं। नहीं है, पांडे बहन भी नहीं है, तो कर दो, कौन कर भाषा दूंगी। में समझाई। 11 बज रहा है, सुबह 6 बजे, साढ़े सब कुछ 11, किया, सुबह 6 लेकिन बजे उठना है। बंद कर दो। कथनी और करनी में बहुत अंतर।
बड़ा ठीक है सर्वेश बहन, RSS का। ठीक है, कर दो, सभी से लाइक कर दो। इसीलिए ना, इसीलिए नहीं। उसी उसी बाप के बेटे ठीक है सर्वेश बहन, ऑन कर दो, काम कर लो, लेटो, सो जाओ, जो करना हो अरे करो। यार इतना बड़ा दीदी गद्दा है, तुम्हें आइडिया सोफा ने की क्या आपकी जरूरत है? लाइन में वो जाओ गद्दे पर लेटो, डबल गद्दा है। लगी रखी सोफा की किसी की तक प्लीज मुझे कौन यहाँ सी बना चीज देना, सब करूँगी। सोफा पर बैठा जाता है तो तुम्हारा भाई गधा है और देखो उसका ऊपर जगी कर क्या, लेता है। मुश्किल ही रहेगा, सो मुझे भी बेड नींद पर लग रही, सोने लेटा ही जा जाता रही है, हूँ, अलार्म लगा कपड़े दो पर 12 आया बजे का, जाता है, डबल गद्दे पर। अलार्म लगा दो। नहीं, सोफे पर सोफा सोने के लिए नहीं है, सोफा पर बैठा जाता है, गधे लोग सोते हैं और तुम गधे नहीं हो, तुम राजा बेटा हो। भाई तू गधा आदमी है। अच्छा लाइव चलानी है, ठीक है, जगा दूंगी, जग रही हूँ तो आवाज़ तेज करना, क्या है ना, आवाज़ तेज कर दो ना, तो वैसे तो आवाज़ चलो बराबर आती है धीरे धीरे, लेकिन जब ये आने लगता है तो इतना तेज आवाज़ आने लगती है कि फिर कैसा भी इंसान सोता रहे, पूरा घर में सब जाग जाते हैं, इस वजह से आवाज़ एकदम मीठी कर देते हैं, आवाज़ कम आती है, ये बहुत तेज आता है।
पूनम बहन स्वागत है। राधे कृष्ण, हर हर महादेव। हमारे बोलो चलते हाँ आधा घंटा रुक जाओ।
सर्वेश बहन, अगर आप लाइव में हो तो आप 12 बज गए हैं, आप बंद कर दिए। मेरी आवाज़ सुन रही हो तो